Thank you. Unknown to the rest of the world, and in fact to most in Colombia, Chiribiquete National Park is a place like no other on our planet. The crown jewel of Colombia's conservation efforts, and a treasure trove of natural and cultural resources, Chiribiquete is a place where life on our planet finds a sacred temple. A temple patrolled and protected by guardians, human and non, for millennia. Situated in the Colombian Amazon, in the states of Guaviare and Caquetá, Chiribiquete was declared National Park in 1989. Expanded once in 2013 and then again in 2018 to make it the largest natural park in Colombia and the largest tropical rainforest reserve in the world, with an astounding 17,000 square miles, an area slightly larger than Switzerland. The park sits in the center of our planet, quite literally. At 0 degrees latitude, it is the confluence point of 3 biogeographical provinces: Orinoquia, Amazonia, and North Andes, and forms the westernmost edge of the Guiana Shield and the northern part of the Amazon Basin, considered by scientists as the most biodiverse area on the planet. Chiribiquete's isolation and inaccessibility have made possible this miracle of biodiversity. Only 8 scientific expeditions have been made to Chiribiquete, and each one has produced new species unknown to science. Its flora and fauna is indeed impressive. With 1,800 plant species, 410 bird species, 82 species of mammals, including large felines, 60 species of reptiles, 57 species of amphibians, 120 species of butterflies, and 60 species of fish, many of which are endemic. Its endless expanse of tropical rainforest also act as a gigantic carbon trap and a continental water filter, consisting of the drainage basins of the Masai, Cuñare, San Jorge, and Amu rivers, and provides 60% of the surface water of the Colombian Amazon. Most people find it hard to believe, but I live and work in a fully net zero development. I also live in the sustainable city, the first community of its type in Dubai. We have 11 biodome greenhouses and a 10 megawatt peak solar production, and it was built to prove the idea that a wholly sustainable community is possible. So I've been a practicing landscape architect for the last 16 years here in Dubai. And over those years, I've really developed a passion for what I call a productive landscape. So a landscape that doesn't just look beautiful, but serves a purpose for growing food, creating habitat, creating shade and microclimates. In 2019, I joined Expo 2020. And Expo 2020, of course, is the most amazing place, and it has a very strong focus on sustainability. It's one of its key principles there. So it's always been a dream of mine to try and live off of one of the landscapes that I've created. Coming into my 50th year, I decided to set myself a challenge, which I call the Sustainable Human Project. The Sustainable Human Project is about eating from one of the landscapes that I have designed and implemented for one whole entire year. Essentially, it's around food that I grow or trade for with my neighbors within the neighborhood that I live in. So it's been just a fantastic learning process. And when you look at the 3 pillars of sustainability, social, economic, and environmental, it's really something that I've learned that you have to have all 3 of those in balance for a project to work.
So far I've been doing really well, but for things that I can't grow, I've implemented a barter system. So like the old days with my neighbors. So what I do is I take recycled wood from the community and I create carpentry works, usually things around urban farming that I trade with my neighbors. One of the great things about this is that it brings me back to thinking about how our grandfathers might have lived. So you have to set up a system with whoever you want to trade with, and you have to really stick to your word. So you have to make sure that both parties are happy with what you're going to trade, and then if you commit to making that trade, both parties have to come together. So in a situation where I'm in, where I rely on these trades for food, it's really important. And that makes me think back to the days where people had to stick to their word, and their word was so important, because if you didn't, very important things like your food, your shelter would fall through. काम नहीं था उस टाइम तो हमारा लॉकडाउन में कौन क्या करते हैं। गांव जाने का भी मौका नहीं था, मन में तो घुटन सा भी होता था, रोती भी थी। चिंता यही थी कि कमाने वाला तो जो था वो तो घर पे ही बैठे हैं, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से दे, कोई भी देने वाला नहीं था। जिस टाइम लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम क्या था कि किसी का 10 दिन का पैसा था, किसी का 15 दिन, क्योंकि महीने के बीच में ये सब रुक गया। मतलब उनको वो पैसा तक नहीं मिला कि जो उन्होंने उस महीने काम किया था, और बहुत सारे लोगों को तो दोबारा उन्होंने बुलाया ही नहीं, मतलब काम छोड़ ही दिया। तो बहुत सारे महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो कोविड से पहले काम करती हैं, पर अभी तक उनको काम नहीं मिल पाया है। चूल्हा जलता तो है पर भूख मिटती कहाँ है, हर दिन बीत जाने के बाद रात ढलती कहाँ है। सब्र सागर सा बना लिया है पर चुनौतियाँ रुकती कहाँ हैं। जो जकड़े हैं मेरे सपनों को वो बंधन अब टूटते कहाँ हैं। मजबूरी की दीवार अब गिरती कहाँ है। ये महिलाएं मतलब सीख सकती हैं दूसरा रोजगार, पर बहुत कम टाइम है उनके पास। मतलब बैठ के फुर्सत से चाय पीने तक का उनके पास टाइम नहीं है। वो 5 बजे उठती है, कोई तो 4 बजे भी उठता है। तो वो सब अपना घर का काम करके और फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर दूसरों के घरों का काम करने के लिए जाती हैं। सुबह निकलती हूँ 7:30 बजे, आते आते 2-2:30 बज जाता है घर पे। उसके बाद 2 घंटा घर रहती हूँ, फिर 5 बजे जाना पड़ता है, फिर शाम को 8 बजे तक वापस आती हूँ। लॉकडाउन के समय में हम लोग फ़ोन के ज़रिए, कॉल के ज़रिए महिलाओं से, डोमेस्टिक वर्कर्स से बात करते थे, जो हमारा नेटवर्क था। उससे ये निकल के आया कि अगर हमारे पास कोई एक ऑल्टरनेटिव हो कि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में भी आए तो हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सके, कैसे हम लोग उसको लेके प्रिपेयर रहे पहले से। हम लोगों ने उस पर कई चर्चाएं किए, फोकस ग्रुप डिस्कशन किया, उनके साथ विजनिंग एक्सरसाइज किया, और उसके बाद पता चला कि ये जो नीड्स है ये पैसों से जुड़ा हुआ है, पैसे के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, वो अपने स्किल को इन्हांस करना चाहती है। ये एक ऐसा स्पेस इनको पहली बार मिला है कि जहाँ हफ्ते में 2-3 बार तो सबका मिलना हो जाता है। बातें करते, समाधान ढूंढते हैं, तो मतलब उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि ये सेंटर हमारा है और हमें जानकारी मिल रही है, हमें गवर्नमेंट स्कीम हो या अपने सेल्फ की जानकारी हो, आसपास जो माहौल है उस सब की जानकारी, तो उनको लगता है अपनापन है यहाँ पे। हर अपने काम को हम बचा सकते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आगे चलेंगे। हर चीज़ की ताकत हम औरतों के पास होती है। आपको करना पड़ेगा, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा।